यदि गौर होई तो लाबे की होई तो के माने दरिता दे। यदि गौर होई तो ताबे की होई तो के मान दरिता दे। यदि गौर होई तो ताबे की होई तो के मान दरिता दे। राधा महिमा प्रेम रसा सीमा जगत जनाता के। राधा महिमा प्रेम रसा सीमा जगत जनाता के। यदि गौर होय तो ताबे की होय तो के माने दरिता दे। यदि गौर होय तो ताबे की होय तो के माने दरिता दे। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगत जनाता के। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगत जनाता के। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी ब्रज युवती भावे भगति सकत हरिता भावे भगति सकत हरिता। यदि गौर हो तो ताबे की हो तो के मान दरिता दे। यदि गौर हो तो ताबे की हो तो के मान दरिता दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जनाता के। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जनाता के। गाओ गाओ पुना गौरांगे रघुना सरल हरिया। गाओ गाओ पुना गौरांगे रघुना सरल हरिया। ए भाव सागर मान गया नदी के खजाना। नदी के खजाना। यदि कौन तो ताबे की हो तो के मान दरिता दे। यदि गौर होई तो ताबे की होई तो के मान दरिता दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जनाता के। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जनाता के। गौरांग बलिया
गैया नागेनु गैया के मान गरीनु दे जोरा गैया नागेनु गैया के मान गरीनु दे देवास दिया पाषाण दिया के मान गड़िया पाषाण दिया के मान गड़िया यदि तो ताबे की उल्टू के मान गड़िया यदि तो ताबे की उल्टू के मान गड़िया राधार महिमा प्रेम रसा सीमा जगत जनता के राधार महिमा प्रेम रसा सीमा जगत जनता के यदि गौर हो तो ताबे की हो तो के मान यदि गौर हो तो ताबे की हो तो के मान राधार महिमा प्रेम रसा सीमा जगत जनता के राधार महिमा प्रेम रसा सीमा जगत जनता के हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. यदि गौर हो तो ताबे की हो तो के मान दरिता दे, यदि गौर हो तो ताबे की हो तो के मान दरिता दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जनत के, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जनत के। Translation. If Lord Gaura had not appeared as the Yuga Avatara in this age of Kali, then what would have become of us? How could we have tolerated living? Who in this universe would have ever learned about the topmost limits of loving mellows that comprise the glory of Sri Ram? Who would have had the power to render ecstatic devotional service that follows in the footsteps of the damsels of Raja? Indeed, the clever expertise of the Rajagopis is a prerequisite for entering the supremely sweet forest of Vrindadevi. Oh, please sing again and again of the glorious qualities of Lord Gauranga. Just try to keep your heart simple. Not even one person within this ocean of nescience has ever seen such a magnanimous personality as he. Even though I chant the holy name of Lord Gauranga, somehow I still have not melted in ecstasy. How, then, have I maintained the burden of this body? How has the Creator fashioned this body with the stone in place of Vasudev Ghosha's heart? Shri Gaurang Mahaprabhu ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Nam Sankirtan ki jai. Hare Krishna. धन्यवाद राधिका भक्ति राधिका, बहुत ही मधुर भजन। Thank you for the opportunity. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आइए स्वागत करते हैं रसिकानंद प्रभु जी का और इंट्रोडक्शन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। राधिका भक्तिन राधिका, बहुत सुंदर तरीका से आप कीर्तन किया। दंडवत प्रणाम महाराज। Good morning. His Holiness Kavichandra Swami Maharaj ki jai. Maharaj, I will take 1 minute for your introduction, Maharaj, if you give me permission. Okay. Thank you, Maharaj. हरे कृष्णा। नित्यम भागवत सेवा कार्यक्रम में जुड़ा हुए सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यं वैष्णवेभ्यं नमो नमः। आज हमारा परम सौभाग्य है, परम पूज्य कविचंद्र स्वामी महाराज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। महाराज परम पूज्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का शिष्य हैं। आज महाराज 10वां स्कंद में 69 चैप्टर में श्लोका नंबर 1 से 6 तक हमको प्रवचन करेंगे। और मेरा शुद्धिकरण के लिए और सभी भक्तों का प्रसन्नता के लिए मैं महाराज को थोड़ा
प्रवचन करता हूँ। आप सब एक हफ्ता से महाराज का इधर दर्शन अनेक बार लिया होगा, फिर भी हम एक बार कर लेंगे। तो महाराज इस्कॉन में जुड़े 1967 में हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से महाराज दीक्षा लिए 1971 में। सो महाराज श्रील प्रभुपाद का पुस्तक वितरण सेवा में शामिल हुए, बहुत सुंदर तरीका में सेवा किया। उन्होंने पुस्तक वितरण लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी और व्यक्तित्वों को वितरण किया। इस कार्यक्रम में महाराज एक संघ बना के सेवा किया। उस संघ का नाम है राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी। उसके पश्चात 1982 में महाराज टोक्यो जापान में मंदिर का प्रेसिडेंट बन के प्रचार किया और महाराज उस समय में संन्यास दीक्षा लिए और थाईलैंड, इंडो चाइना, इंडोनेशिया, ग्रीस और वेस्ट अफ्रीका में महाराज सेवा किया। महाराज जीबीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी में, इस्कॉन लॉ कमेटी और रिविजन कमेटी में सेवा किया। और महाराज इसका बीच में मुंबई में भी राधा रास बिहारी मंदिर में भी जनरल मैनेजर बनकर सेवा किया। और महाराज परिव्राजक रूप से अनेक देश में यात्रा करके दीक्षा दे रहा है। और महाराज इस भौतिक जगत को एक वसुदेव कुटुंब रूप से देख रहा है। ऐसा महाराज हर भक्तों को ब्लेस करके सेवा कर रहा है। आइए हम सब मिलकर महाराज को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप कर महाराज को व्यासासन में आवाहन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू महाराज। प्लीज गो अहेड महाराज। ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायां ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सज्जनातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्विषे नमः। कांचितात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शाक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवे प्रणमामि हरि प्रिये। Jai, good morning. Thank you all, and thank you for giving me a chance to read Srimad Bhagavatam in the morning in the Association of Devotees. It's always recommended to read in the Association of Devotees.
Haribol. Haribol. Yeah, Hare Krishna Maharaj. Okay. So this chapter has a long summary. Would we like to read this summary? Haribol? Yes, Maharaj. You would like us to read, Maharaj? Yeah, I think it's a good idea. Yeah. Shall I read? You can read, Maharaj. Yeah, Sasikanand Prabhu, can I read? I'll read the. Yes, Prabhu, please. Should we just read the Hindi? Okay. Everybody online is Hindi? Is everybody on the Zoom Hindi speaking? Then you can just read the Hindi. हरे कृष्णा दीपक प्रभु। Yes, प्रभु जी। प्रभु जी हिंदी में पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। नारद मुनि द्वारा द्वारका में भगवान कृष्ण के महलों को देखना। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह नारद मुनि भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखकर चकित हुए और किस तरह उन्होंने भगवान की स्तुति की। नरकासुर को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने एक साथ 17,000 कुमारियों को ब्याहा और नारद मुनि ने भगवान के अद्वितीय स्थिति में विविध कार्यकलापों का अवलोकन करना चाहा। अतः वे द्वारका गए। नारद मुनि 16,000 महलों में से एक में प्रविष्ट हुए और उन्होंने देखा कि स्वयं रुक्मिणी देवी हजारों दासियों के होते हुए भी श्री कृष्ण की सेवा स्वयं कर रही थी। ज्यों ही भगवान कृष्ण ने नारद को देखा तो अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए, उन्हें प्रणाम किया और तब उन्हें अपने आसन पर बैठाया। तब भगवान ने नारद के पांव पखारे और उस जल को भगवान का आचरण इतना आदर्शात्मक था। भगवान से थोड़ी देर बातें करने के बाद नारद उनके एक अन्य महल में गए, जहां उन्होंने श्री कृष्ण को उनकी रानी तथा उद्धव के साथ टोसा खेलते देखा। वहां से दूसरे महल में जाकर देखा कि भगवान कृष्ण अपने छोटे से शिशुओं को दुलार रहे थे। जब वे अन्य महल में गए तो उन्हें स्नान के लिए जाते थे। उसे आगे वाले में यज्ञ करते, संध्या लग रहे तो सभी आगे वाले में ब्राह्मणों को भोजन कराते और अन्य महल में ब्राह्मणों का जूठन खाते देखा। एक महल में भगवान दोपहर का अनुष्ठान कर रहे थे, अन्य में गायत्री मंत्र का मौन जप कर रहे थे। अगले वाले महल में अपने बिस्तर पर सो रहे थे और उससे अगले वाले में अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहे थे और उससे भी आगे वाले में वे सखियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। कहीं भगवान ब्राह्मणों को दान दे रहे थे तो अन्य स्थान पर वे अपने प्रेयसी से हंसी मजाक कर रहे थे। कहीं और वे परमात्मा का ध्यान कर रहे थे तो कहीं वे अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा कर रहे थे। कहीं वे अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था कर रहे थे तो अन्य कहीं वे पशुओं का शिकार करने जा रहे थे। अन्यत्र वे वेश बदलकर यह पता लगा रहे थे कि नागरिक उनके बारे में क्या सोचते हैं। यह सब देखकर नारद ने भगवान कृष्ण से कहा, मैं आपकी योग माया शक्ति की इन विविधताओं को, जिन्हें मोहग्रस्त सामान्य जीव अनुभव नहीं कर सकते, समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों की सेवा की है। इस तरह मैं परम भाग्यशाली हूँ और मेरी यही इच्छा है कि समस्त लोगों को शुद्ध करने वाली आपकी लीलाओं की महिमा का तीनों लोकों में घूमकर कीर्तन करूं। श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि आप भगवान के दिव्य ऐश्वर्य को देखकर हैरान ना हो, और उन्होंने नारद से इस संसार में अपने प्राकट्य का उद्देश्य बतलाया। तत्पश्चात धर्म के अनुसार मुनि का समुचित आदर किया और नारद जी भगवान का निरंतर ध्यान करते हुए वहां से विदा हुए। हरे कृष्ण। Yeah, so that's a summary of everything. And this is a special exhibition of Krishna's opulence. Haribol?
Yes, Maharaj. Okay, we'll read the first six chapters, first six verses. I'm getting some echo. Can I read, Maharaj? Well, I'll read the Sanskrit and the English. But Hare Krishna, no, there's Hare Krishna, okay. Shisukuvacha narakam niyatam shutva tato dvaham chayoshitam krishnena ikena va vivnam taddidrakshu smanarada chitram vataitad ekena papusha yugapat pritak griheshu dvasta sahasram striya eka udavahat it yutsuko dwaravatim devarshir drastam agamat pushpi to pavat narama dujali kuru naditam utpulen dvi varamboja kalaha kumudot palai shuditeshu saraksu chai kujitam hamsa sadasai Prasada Lakshaya Navabir Justam Spatika Rajitai Maha Marakata Prakyai Swarna Ratna Parichadai Vibhakta Ratya Patta Chatwara Panai Shala Sabhavi Ruchiram Suralai Samsikta Margana Gana Viti Dehalim Patat Pataka Dwaja Varita Patam. Long one. Sukadeva Goswami said, hearing that Lord Krishna had killed Narakasura and had alone married many brides, Narada Muni, desiring to see the Lord in this situation, thought, it is quite amazing that in the single body of Lord Krishna simultaneously married 16,000 women, each in a separate palace. Thus the sage of the demigods eagerly went to Dwarka. Okay, read it. Haribol? Hare Krishna Maharaj. Yeah, Hare Krishna. You're going to read the Shukr. Hindi? Yes, Maharaj, I will read it in Hindi. Okay, For there's such a translation, delay. Radha Pad Pankaj Prabhu will do translation, Maharaj. Okay. Thank you, Maharaj. हरे कृष्णा महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब नारद मुनि ने सुना कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया है और अकेले अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर लिया है, तो नारद मुनि के मन में भगवान के इस स्थिति में देखने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा, ये अत्यंत आश्चर्यजनक है कि एक ही शरीर में भगवान ने एक साथ 16,000 स्त्रियों से विवाह कर लिया, और वह भी अलग अलग महलों में। इस तरह देव ऋषि उत्सुकता पूर्वक द्वारका गए। यह Okay, is that the finish of that paragraph? The city was filled with the sounds of birds and bees flying around the parks and pleasure gardens, while its lakes, crowded with blooming Indrivara, Amboja, Kalara, Kumuda, and Utpala lotuses, resounded with the calls of swans and cranes. Dwarka boasted 900,000 royal palaces, all constructed with crystal and silver and splendorously decorated with huge emeralds. Inside these palaces, the furnishings were bedecked with gold and jewels. Traffic moving along a well-laid system of boulevard roads, intersections, and marketplaces
and many assembly houses and temples of demigods graced the charming city. The roads, courtyards, commercial streets, and residential patios were all sprinkled with water, shaded from the sun's heat by banners waving from flagpoles. यह नगर बगीचों के तथा उद्यानों से युक्त था, जिसके आसपास पक्षियों तथा भौरों की ध्वनि गूंज रही थी। इसके सरोवर खिले हुए इंदिवर, अम्भोज, कहर, कुमुद तथा उत्पल से भरे हुए थे और हंसों तथा सरसों के बोलियों से गूंजमय थे। द्वारका के 9 लाख राजमहलों के होने का गर्व था। ये सारे महल स्फटिक तथा चांदी से बने थे और विशाल मरकट माननियों से जज्वलमनन थे। इन महलों के भीतर साज सामान पर सोने तथा रत्नों की सजावट थी। यातायात के लिए व्यवस्थित गलियां, सड़कें, चौराहे तथा बाजार थे और इस मनोहर नगर में तथा उनके सभा भवन तथा देव मंदिर शोभा को बढ़ाने वाले थे। सड़कें, आंगन, व्यापारिक मार्ग तथा घरों के आंगन जल से सींचे हुए थे और लट्ठों में लहरा रहे झंडे से सूर्य की गर्मी से छाया पा रहे थे। Purport by the followers of Srila Prabhupada. In Krishna, that's the Krishna book, Srila Prabhupada beautifully describes the city of Dwarka as follows. Being inquisitive to know how Krishna was managing his household affairs with so many wives, Narada desired to see these pastimes and so set out to visit Krishna's different homes. When Narada arrived in Dwarka, he saw gardens and parks full of various flowers of different colors, and the orchards overloaded with a variety of fruits. Beautiful birds were chirping and peacocks crowed delightfully. तात्पर्य शिला प्रभुपाद कृत। जय शिला प्रभुपाद। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में शिला प्रभुपाद ने द्वारका नगरी का एक सुंदर वर्णन इस प्रकार किया है इस विषय में कि श्री कृष्ण अनेक पत्नियों के साथ किस तरह गृहस्थी चला रहे थे। जिज्ञासा होने के कारण नारद जी को इन लीलाओं के दर्शन करने की इच्छा हुई, अतएव वे श्री कृष्ण के विभिन्न घरों को देखने चल पड़े। जब नारद मुनि द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वाटिकाओं और उद्यान रंग बिरंगी फूलों से पूर्ण है और फलों की वाटिकाएं अनेक प्रकार फलों से लदी हुई है। There were ponds full of blue and red lotus flowers, and some of these ponds were filled with varieties of lilies. The lakes were full of nice swans and cranes, and the voices of these birds resounded everywhere. In the city, there were as many as 900,000 great palaces built of first-class marble with gates and doors made of silver. The pillars in the houses and palaces were bedecked with jewels such as touchstone, sapphire, and emerald, and the floors gave off a beautiful luster. The highways, lanes, streets, crossings, and marketplaces were all beautifully decorated. The whole city was full of residential homes, assembly houses, and temples, all of different architectural beauty. All of this made Dwarka a glowing city. The big avenues, crossings, lanes, and streets, and also the thresholds of every residential house were very clean. On both sides of every gate, there were bushes, and at regular intervals, there were large trees that shaded the avenues so that the sunshine would not bother the passerby.
सुंदर पक्षी चहचहा रहे थे और मोर हर्ष से कुहुक रहे थे। वहां ताल तथा सरोवर भी थे जो रक्तमलों तथा नील कमलों से भरे थे, और किसी किसी जगह पर नाना प्रकार की कुमुदिनियां खिली थी। जलाशय में सुंदर हंस तथा सारस भरे हुए थे और उनकी ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। नगर में चांदी से बने हुए द्वारे वाले उच्च कोटि के संगमरमर बने हुए थे। 9 लाख विशाल महल थे। गृहों तथा महलों से स्तब्ध परसर पत्थर नीलम तथा मरकट मणियों से सज्जित थे और फर्श से सुंदर प्रभा चमकती थी। मुख्य पथ, गलियां, चौराहों तथा बाजार बहुत ही सुंदर ढंग से सजाए गए थे। संपूर्ण नगर विविध प्रकार के शिल्प सौंदर्य वाले गृहों, सभा भवनों तथा देव मंदिरों से पूर्ण था। ये सब मिलकर द्वारका के देदीप्यमान्य नगर बना रहे थे। प्रशस्त पथ, चौराहे, गलियां तथा मार्ग और प्रत्येक घर के आंगन अत्यंत स्वच्छ थे। प्रत्येक मार्ग के दोनों ओर झाड़ियां तथा समान अंतर बड़े बड़े वृक्ष थे जो छाया प्रदान करते थे ताकि पृथकों से को धूप से कष्ट ना हो। All right, so you might know that Narakasura is mentioned here. That was the son of Krishna, actually. Haribol? Maharaj, could you please repeat, please? Because Yeah, Nara, it says he killed Narakasura. Narakasura was Krishna's son, right? That was impregnated, he was the son of the earth. yeah, so Narkasur was the son of the earth. That's what it says. Narkasur जो थे वो भूमि के पुत्र थे And he got into bad association with Banasura, and then Krishna had to kill him. तो उसका जो संग था वो बानासुर के साथ था, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध किया। So anyway, I think that's the one. But anyway, Dwarka, this description of the opulence is quite inconceivable, although we might see some, small samples of opulence in the modern world here. द्वारका का जो शोभा है वो अचिंत्य है, लेकिन फिर भी जब हम द्वारका जाएंगे तो थोड़े कुछ मात्रा में वो नजर आते हैं। So we get bewildered by little opulence of a Rolls-Royce car, or, some fancy hotel or something. But compared to these descriptions, whatever this so-called opulence now is just junk, तो yes, तो हम कभी कभी थोड़ा सा स्तब्ध हो जाएंगे ये सब सुन करके कि ये शिला प्रभुपाद ने क्या लिखा है इसके ऊपर, लेकिन अगर इसको प्रत्यक्ष प्रमाण में आप देखने जाए तो वहां पर जो कुछ भी होगा वो किसी कचरे के समान हो सकता है, ऐसे हमको मन में आएगा। There are some samples here. It's mentioning a few different kinds of lotus. It's mentioning the different kinds of lotus flowers. हाँ, कुछ अगर हम लोग को सैंपल देखना है या कुछ देखना है तो आप अभी भी उधर जाओगे तो कुछ प्रकार के कमल के फूल आपको जरूर दिखेंगे। So that we can see. There's one in the city in China named Hangzhou. There's a lotus pond where the one king made some years ago, and it has 1,000 different lotus flowers. तो चीन के किसी एक प्रांत में वहां पर उन्होंने बनाया है कि एक प्रकार के कमल को उन्होंने खिलाया है और हजारों प्रकार के रंगों में और तरीकों में उसको प्रेरित किया है। So if we look at nature and we see all the different varieties of flowers and fruits and people and animals and how they're decorated, like the birds, so beautifully colored, and so then we can get some idea of the opulence, real opulence.
अगर हमको भगवान के ऐश्वर्य के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी समझना है तो हम ये समझ सकते हैं कि आप दुनिया में विविध प्रकार के देशों में जाते हो तो कई प्रकार के फूल, फल, लोग, पक्षी, पशु और पक्षियों के विविध प्रकार के रंग, उनके आवाज है, तो उससे समझ में आता है कि भगवान के कुछ ऐश्वर्यों के बारे में हमको अंदाजा हो सकता है। What do we have here in all these cities? So many skyscrapers, but they're just cement and sand, just sand and glass. It's all mostly sand. तो जहाँ पर अभी हम बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वो क्या है? वो सिर्फ पत्थर, मिट्टी और सीमेंट है और थोड़े से घास है, बस और कुछ नहीं है। The concrete is 70% sand. जो हम सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं वो 70% रमल होता है। And the glass is 100% sand. और जो कांच जो आप देख रहे हैं बाहर, वो 100% रमल है। So they're not going to last very long, and they're not really they're not beautiful at all. तो खूबसूरत भी नहीं है और बहुत ज्यादा टिकेंगे भी नहीं, उसकी एक छोटी सी अवधि होती है। So Dwarka, inconceivable, but this Krishna is, for Krishna that's nothing. द्वारका जो है वो भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। This is even the opulence that Yudhishthira had was bewildering even to the demigods. They were bewildered, but he was completely detached from it. युधिष्ठिर महाराज का जो इंद्रप्रस्थ था वो देवताओं को भी भा गया था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को उससे कोई सरोकार नहीं था, वो संपूर्णता से उससे विलक थे, पृथक थे। So, and then Krishna showed his opulence in many different ways, besides, opulence with jewels and gold and marble and everything. तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य का संपूर्ण प्रदर्शन किया, जिस प्रकार के स्वर्ण, स्फटिक, विभिन्न प्रकार के माणिक, उससे अपना घर बनाया। Even now, the Mathura Vrindavan area has more varieties of birds than any place else in the world. अभी भी अगर आप भौतिक जगत के उत्तर प्रदेश में वृंदावन धाम जाओगे तो वहां पर विभिन्न प्रकार की पक्षियां हैं जो दुनिया में बहुत कम पड़ता है, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा है। Bird watching study people, they come there to study all these different birds. तो जिन लोगों को पक्षियों के जीवन में इंटरेस्ट होता है वो लोग उधर आके इन पक्षियों के जीवन शैली के बारे में काफी प्रकार से सीखते हैं। But now, because of all the tiny skyscrapers they're building in Vrindavan, not as many birds are coming. लेकिन दुख की बात है कि अभी छोटे छोटे जो बिल्डिंग है लंबे लंबे पोजीशन लेना शुरू कर दिए, तो ज्यादातर अभी पक्षियां वहां आने से कतराती है, नहीं आती है। Because it's bewildering for them, all these glass and so the Kali Yuga so-called opulence of cement buildings is destroying even the beauty of the natural opulence. अब कलयुग के माध्यम के वजह से जो बड़े बड़े कांच के शीश महल जो खड़े हो रहे हैं, वो जो है वो प्राकृतिक शोभा को खत्म कर रही है। So this chapter is about Krishna's opulence of not only having so many wives, there are rich men in the world now that have even hundreds of wives. तो ये जो अध्याय है ये सिर्फ भगवान के ऐश्वर्य के बारे में नहीं है, जब बल्कि उनके पत्नियों के बारे में भी है, जिनके बारे में चर्चा की गई है। But they can't live, they can only live with one at a time, or maybe two or three. बट उन लोग उसके बगैर जी नहीं सकते। But Krishna's opulence is that he had a separate palace for each wife, and he was home with them and everything. लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य इतना अचिंत्य है कि वो उतने पत्नियों के साथ अलग अलग महलों में रह रहे थे और अलग अलग प्रकार से जी रहे थे। Nobody thought, why he's not with me. ऐसा कभी किसी की पत्नी के मन में नहीं आया कि ये मेरे साथ क्यों नहीं है। Like that King Chitraketu, he had many wives. राजा चित्रकेतु के भी कई पत्नियां थी। But when the one wife finally had a son, he was spending all his time with that wife.
आखिर में जब इतने पत्नियों में से किसी एक पत्नी को जब एक बेटा हुआ तो राजा ने संपूर्ण समय उसी पत्नी के साथ बिताना शुरू किया। Then the other wives became envious, and they became so envious they killed the baby. बाकी की पत्नियों को इतना रोष हुआ कि उन्होंने उस बच्चे का ही हत्या कर दी। So this is, no one else can do like Krishna. इसके लिए इससे परिचित होता है कि भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं कर सकता। My father he didn't really believe in God. मेरे पिताश्री जो थे वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे। And he saw the Krishna book. I gave the Krishna book to my family, but he फिर must have मैंने just उनको pictures. कृष्णा किताब दिया पढ़ने के लिए। And he saw that Krishna had 16,000 wives. तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं। And he just, how can you believe that? You're stupid, you're brainwashed. Nobody can do that. I couldn't have 16,000 wives. It's impossible. बोला ऐसे कैसे हो सकते हैं, 16,000 पत्नियां कोई रख भी कैसे सकते हैं? आप मूर्ख हो, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई जो आप इन सब चीजों में विश्वास करते हो। मैं खुद 16,000 पत्नियों के बारे में कल्पना नहीं कर सकता, रख नहीं सकता। But actually, in the real sense, everyone is like a wife of Krishna. Krishna is Purusha. Everyone else is Prakriti. So 16,000 is nothing. सत्य में देखा जाए तो हम सभी भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। 16,000 तो कुछ नहीं है। हम सभी जो है हमारे स्थान है वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का स्थान है। And Krishna as a super soul is in the heart of every living entity, not only wives, everyone. He's with all of us all the time. और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के स्वरूप में हम सभी के हृदय में बैठते हैं, इसके लिए वो हम सभी के स्वामी हैं। Another time we were speaking in a university in Lagos, Nigeria. एक दफा मैं एक विश्व महाविद्यालय में बात कर रहा था इस चर्चा के बारे में। And of course, most of the students are Christian or Muslim. तो उसके अंदर काफी ईसाई और इस्लाम पंथ के भी लोग थे। And somehow I mentioned this that Krishna had 16,000 wives. और वार्तालाप के दौरान मैंने ये बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं। So one student was objecting so strongly. एक ने बहुत ही तीव्र प्रतिकार किया, एक स्टूडेंट ने। But his objection wasn't that the number. He said God can't get married. God can't be married. तो उसको नंबर के बारे में आशंका नहीं थी। 16,000 बोला भगवान शादी ही कैसे कर सकते हैं? भगवान शादी नहीं कर सकते। Because they have an impersonal conception of God. क्योंकि उनके विषय में जो है उन लोग मानते हैं कि भगवान जो है निराकार है, उनको कोई आकार नहीं है। And I said, well, if you can get married, why God can't get married? You think you're better than God? तो मैंने उनसे पूछा कि अगर तुम विवाह कर सकते तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें लगता है तुम उनसे श्रेष्ठ हो? So he couldn't answer that. But he just couldn't accept that God could be married because they don't believe that God is a person. तो उसके पास उसका कोई उत्तर नहीं था। तो वो सोच में पड़ गया कि भगवान क्यों शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं कि भगवान को कोई स्वरूप है। So Prabhupada, he very kindly gave us all this information, Srimad Bhagavatam, so we get some idea of Krishna. We can't become God. We can't. इसके लिए शिला प्रभुपाद ने बड़े प्रेममय रूप से हम सबको श्रीमद् भागवतम में ये बताने की चेष्टा की है कि भगवान कौन है, और ये भी बता दिया कि हम भगवान नहीं बन सकते। So Narada Muni, even when he heard about it, he was fascinated. नारद मुनि स्वयं विस्मित हो गए थे ये सब ऐश्वर्य देख करके। And he went to Dwarka to see this phenomenon. तो उस अवस्था में वो द्वारका की तरफ एकदम दौड़ के लपक के चले गए ये देखने के लिए किधर क्या हो रहा है। So this is giving us an idea what a city should actually be like. तो ये दर्शाता है कि एक शहर की प्रतिमा कैसे होनी चाहिए। Now we're trying to plan the Mayapur city, so we're trying to think of how to make it nice. तो अभी हम बनाते हैं, बड़े बड़े शहर बनाते हैं, उसको खूबसूरत बनाने की चेष्टा करते हैं।
So there was birds and bees flying around in the parks. और शहरों में हम ये देखते हैं कि जो पशु और पक्षी है उनको किसी जू के अंदर रख दिया जाता है, चिड़ियाघर में रख दिया जाता है. Now we see flies and crows mostly in the park. और आसपास में हमारे मक्खियां भिन भिन आती हैं काले कौवों के साथ. Not beautiful birds that are singing sweetly or anything like that. खूबसूरत पक्षियां तो मतलब लुप्त ही हो गए, वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं आजकल. See, here we see mostly pigeons. यहाँ पर दुबई में हम ज्यादातर कबूतरों को देखते रहते हैं. Then there were lakes with many different lotus flowers. बस वो सिर्फ सही जगह मतलब अंडा देते हैं और जगह को खराब कर देते हैं. Just mentioned a few here. I don't know if you know, we know what they are. Hinduvara, Amboja, Kalara, Kumuda, Utpala. They're different kinds of lotus. तो जिन कमलों के नाम महाराज ने लिए, ये विभिन्न प्रकार के कमल होते हैं जो कि द्वारका में स्थित थे. And like I said, the one park in China has 1,000 different kinds of lotus. और एक जगह है चाइना में जहाँ पर 1000 प्रकार के कमल के फूल होते हैं. The people, kings even a few hundred years ago, they had some idea. कुछ हजार साल पहले, कुछ 100 वर्ष पहले भी उनको पता नहीं था कि ऐसे हो सकता है. And there were swans and cranes. बगला और हंस. Because those are very beautiful birds and they're very, nice, soothing for the mind when you see them. ये बहुत ही खूबसूरत पक्षी होते हैं, इनको देख के मन एकदम रम्य हो जाता है. Is that a bad thing? No, it's not, because I'm kind of on the same boat. Okay. Anything romance, anything makes me cry. What's your guilty pleasure? If I were to ask you, what's your guilty pleasure? हरे कृष्णा. And then, so 900,000 royal palaces. 9 लाख महल थे वहां पर. That's a big number, ये बहुत बड़ी संख्या है 9 लाख की. Because Krishna had 16,000 wives with all his children and all his grandchildren and all the dynasty. It was a huge place. तो भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, उनके बच्चे थे, उनके रिश्तेदार थे, तो ये एक बहुत ही बड़ा समुदाय था. Vrindavan had the opulence of unlimited numbers of cows. वृंदावन के अंदर ये ऐश्वर्य आपको 9 लाख गायों में दिखती है. It's also said that in Vrindavan, at the time of Krishna, every kind of flower and fruit was blooming there, not just a few. और ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में आए थे तो हर प्रकार के फल और फूल वहां पर उग रहे थे, ना कि कुछ और भी. So by nature, there's so much wonderful variety. So also in natural society, a city, they could build like this, unlimited beautiful varieties of things. तो प्रकृति में भी ऐसे बहुत से खूबसूरत चीजें हैं जिसको हम लेकर के शहर बना सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक तरीके से. I heard in Bengal there's 1,000 different kinds of bananas. सिर्फ बंगाल मात्र में 1000 प्रकार के केले का उत्पादन होता है. And even, well, nowadays, but in India, even in America, there were so many varieties of rice, so many varieties of wheat. आज भी भारत वर्ष में और अमेरिकी वर्ष में अगर आप देखो तो कई प्रकार के धान और गेहूं उगता है. And I don't know how many mangoes there are in India, how many different kinds of mangoes. भारत वर्ष के अंदर ही कितने प्रकार के आम उगते हैं, अलग अलग स्वाद के. Swami was telling me, he's been traveling in Bangladesh for so many years, right? 30, 40 years. He said every time he goes there, he finds some fruit or vegetable he never saw before. तो भक्ति विकास महाराज बता रहे थे कि कई वर्षों से 30-40 वर्ष से वो बांग्लादेश जाते हैं, तो कई प्रकार के उसको जब भी नए हमेशा जाते हैं तो नए प्रकार के वेजिटेबल्स दिखते हैं. And then the cooks, like Gujaratis, we were in Fiji, and every day I would say, "What is this preparation?"
तो जब वो गुजरात में भी गए तो कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के व्यंजन उनको दिए जाते थे, तो पूछते थे कि ये सब क्या है। And they would say popo, papaya. They were cooking it in so many different ways I couldn't recognize it. मतलब व्यंजन जो होते कई प्रकार के तरीकों से उसको पकाने के वजह से और प्रस्तुत करने की वजह से समझ में नहीं आता था कि ये वही सब्जियां हैं। I was in the low, they have a beautiful flower garden in Singapore. सिंगापुर में एक बहुत ही खूबसूरत पुष्पों का बाग था, बगीचा था। And they have a special lotus garden, really big. और उसके अंदर उन्होंने एक स्पेशल प्रकार के लोटस गार्डन रखा था, कमल के फूलों का गार्डन था वो। So they said that the lotus, not lotus, I mean orchid, the orchid. Orchid flower. Maharaj, I didn't get you, sorry. The orchid flower. अच्छा, bouquet flowers. Okay. Everybody knows the orchid flower. You know, it's a beautiful flower. Hare Krishna. Say that there's 36,000 varieties of orchids. तो 36,000 प्रकार के ऑर्किड फ्लावर्स होते हैं। And that's in the material world. और ये भौतिक जगत में, धरती के ऊपर भौतिक जगत में ये है, इस संख्या में। We have no idea of how many varieties of the spirit, even the heavenly planet. हमें इसकी तो कल्पना ही नहीं कि कितने प्रकार के पुष्प इस भौतिक धरती पर है और स्वर्ग लोक में है। And what I speak of the spiritual world, unlimited varieties of everything. तो हम विचार कर सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत वैकुंठ धाम में कितने विभिन्न प्रकार के पुष्प होंगे, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। Interesting that we enjoy varieties of things. तो हमको एक रुचि होती है कि विभिन्न प्रकार के चीजों को भोगने की या उसको एंजॉय करने की। We like to go to a restaurant that has many different varieties of things to choose from. Right? हमें रेस्टोरेंट जाना पसंद है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के सूची मिलती है खाने के लिए और उसको एंजॉय करने के लिए। We like to go to the Carrefour store or something where they have unlimited things. Carrefour जाते हैं और विभिन्न प्रकार के कई चीजों को हम लोग लेते हैं। We like varieties of flowers and fruits. और हमें विभिन्न प्रकार के फल और फूल भी पसंद आते हैं। But then we want all the people to be the same. Everybody should be like me. फिर हम ये चाहते हैं कि सारे लोग भी एक जैसे ही हो। But no, the variety is interesting. So that everybody is individual. We're all different. इसके लिए लोग भी एक जैसे नहीं हो सकते, वो अलग अलग होते हैं, उनकी स्वाद भी अलग अलग होती है, एक नहीं हो सकते। Mayavadis want everything to become all one, and that would be horrible. जो मायावाद है वो बोलते हैं कि सभी अभिन्न है, सब एक है, तो वो कितना गंदा हो सकता है, कितना मतलब मूर्खता पूर्वक हो सकता है। This is only one type of flower, no flowers, no variety, nothing. आप सोच करके देखो कि सारे विश्व भर में सिर्फ एक ही प्रकार का फल है, एक ही प्रकार का फूल है और कुछ भी नहीं है, तो दुनिया कैसे दिखेगी? So we should appreciate the different varieties of people, and we can learn from everyone. इस वजह से हम जो है अलग अलग लोगों से मिलकर के उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि भिन्न प्रकार के लोग भिन्न प्रकार की चीजें हमको सिखा जाते हैं। We can meditate on Krishna. और हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए, सराहना चाहिए कि हमने क्या सीखा। Because the people of Dwarka, their only interest was to see Krishna. When Krishna left Dwarka to go somewhere else, they were just waiting for him to come back. They were not bewildered by all this opulence when they were living. द्वारकावासी जो थे उनका मन में एक ही बात था कि वो भगवान को ही देखना चाहते थे, उनके सानिध्य में रहना चाहते थे। जब वो चले जाते थे किसी काम से द्वारका छोड़ करके, तो वो प्रतीक्षा करते थे कि भगवान कब आएंगे, कब मिलेंगे और कब उनसे हमारा मिलन होगा। Like we say, Yugayatam Nameshena, everything seems like nothing without Krishna. तो जब भगवान नहीं होते तो ऐसा लगता था कि सब कुछ शून्य हो जाता था, कुछ भी चीज में हमको
इंटरेस्ट नहीं होता था, But still Krishna gives all this opulence. बट फिर भी संपूर्ण जगत के लिए भगवान ने यह ऐश्वर्य दिया है. So, you know, people will doubt this, but like I said, if you just look at, even now, like I saw in Abu Dhabi, this temple, you know, I didn't see inside, but I heard about it. So it's a little bit opulent, or these hotels around here, you know, they have some gold doorknobs and things. तो हम कभी कभी भौतिक जगत में भी देखते हैं कि जब बाहर गए होटल्स में जाओ या किसी राजमहल में जाओ तो स्वर्ण के हैंडल्स होते हैं, स्वर्ण के लॉक होते हैं, तो ऐसे थोड़ा बहुत ऐश्वर्य देखने को मिलता है. But it's nothing compared to this. But if we look at it in India, you know, the old temples or even some of the palaces, are just inconceivably opulent. But that was only a few hundred years old. So what to speak of 5,000 years? लेकिन ये सब भगवान श्री कृष्ण के तुलना में कुछ भी नहीं है. आज से कुछ 100 वर्ष पहले भी आप भारतवर्ष में बड़े बड़े मंदिरों में या राजमहलों में जाओ तो उनका ऐश्वर्य देख के मन एकदम चकित हो जाता था. The highest opulence is Vrindavan, Goloka. They don't have palaces. They don't have all that. सबसे संपूर्ण ऐश्वर्यवान जगह है गोलोक वृंदावन. वहां पर कोई भी बड़े बड़े राजमहल नहीं है. But they have unlimited varieties of animals and cows, even the cows, so many different colors of cows, so many different flowers and birds singing all the time. और गोलोक वृंदावन में आप जाओगे तो उसका ऐश्वर्य है कई प्रकार के भिन्न खूबसूरत गायें, पशु, पक्षी और बहुत सी चीजें जो उधर ऐसी हैं जो मन को आकर्षित करती है. So when the gopis saw Krishna at Kavichandra with all this opulence, they didn't like that. They weren't attracted at all. They, no, we want Krishna in the forest. You know, तो जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्यमय द्वारका रूप देखा और द्वारकाधीश का रूप देखा तो वो बिल्कुल भी प्रेरित नहीं हुए. उनको तो उनके भगवान चाहिए थे वृंदावन के वनों में घूमने वाले श्याम सुंदर, decorated with forest flowers. You know, nice. उनको वो वनवासी थे, उनको वन की जीवन पसंद आती थी. All right, so keep this in mind. Don't. There's so much shops nowadays and opulent, so-called opulent things, but they're just so much plastic even. तो एक चीज का ध्यान रखना कि आजकल भी बहुत ऐश्वर्य दिखता है लेकिन ये संपूर्ण ऐश्वर्य प्लास्टिक के ऊपर स्थित है. And Dwarka buildings were made out of gold and silver bricks, even in Lanka. Ravana's buildings were made out of gold and silver. जबकि द्वारका की जब रचना की गई थी तो वो स्वर्ण और रजत से बनी गई इमारतें थी. उसमें सीमेंट, पत्थर, प्लास्टिक कुछ नहीं था. Now it's cement and steel. अभी सब जगह में इस्पात यूज किया जाता है, आयरन, लोखंड. But we think it's wonderful. और हम सोचते हैं कि ये कितना अच्छा है. And you see these buildings, there's no artwork or anything, they're just flat. They put some different colors and waves once in a while, but not like the old buildings, you know, you see in India and Europe where there's all kinds of artwork and sculptures. तो अगर आप देखा जाए तो आजकल के जो बनाए हुए इमारत है उसमें शिल्पकला है ही नहीं. शिल्पकला वो होती है जिससे बिल्डिंग की खूबसूरती को दिखाया जा सकता है. बस सीधा सपाट दीवारें खड़ी कर देते हैं, सीमेंट और दरवाजा लगा देते हैं और उसको घर का नाम दे देते हैं. Okay, so stop and take some comments or questions. तो मैं यहाँ पर अभी पूर्ण विराम देता हूँ और आपके प्रश्नों के लिए वेट करता हूँ, या आपके पास कोई टिप्पणी हो तो आप बता सकते हैं. Especially when we see Mathura now, it's like bewildering. But if we know the history that the Muslims and the British, they hauled out from you know, they carried out from Mathura so much gold and jewels and just so many things they took away and stealing for years and years. अगर आप देखने को जाए तो भारतवर्ष जो था बहुत ही संपन्न था, लेकिन कई 100 वर्षों तक जो पाश्चात्य देश से मुस्लिम इन्वेडर्स और
ब्रिटिश इन्वेडर्स आए थे तो उन्होंने वो झोलियां भर भर के And they जो broke यहाँ से down चोरी people, करके ले, and, they smashed all the really nice buildings. और जितने भी खूबसूरत शिल्पकारियां था उन सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। For hundreds of years, but that was only a few hundred years ago. और कई सौ सालों से ऐसा करते रहे। Time, so things changed. और समय के साथ फिर परिवर्तन हुआ। Okay, so anybody want to say, please say something, question or answer. कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है, बोलना चाहता है तो कृपया करके बोलिए, महाराज उस प्रश्न का उत्तर देंगे। दीपक प्रभु, अभिषेक प्रभु। कृष्णा प्रभु, प्रभु जी आप एक और कीजिए। Hare Krishna Maharaj. Yeah. Thank you for the beautiful class. You explained so many opulences of the Lord. But what about the opulences which depicts the qualities of the Lord? I mean, how do we, when we hear so many opulences in terms of palaces, flowers, and so many things, how do we correlate with the opulences which depicts how can we connect it with the qualities of the Lord, which like he is very merciful and he is a Bhakt Vatsal, and when we listen to this opulences, which is sometimes we can see materialize, but what about his, how do we relate his subtle qualities? I don't know if they how to relate to him, but that Krishna gives his devotees, everything. प्रश्न ये था अभिषेक प्रभु का कि आपने इतने सारे गुणवृत्ति बताए, भगवान के ऐश्वर्य बताए, तो भगवान के जो गुण है इन ऐश्वर्य के उन गुणों से हम कैसे देखें और उसको कैसे समझें, तो महाराज उसका उत्तर देने जा रहे हैं। But like I said, the inhabitants of Dwarka who were living there, their only interest was Krishna. And his beauty, of course, is his greatest of all his opulences. But he has also wealth and fame, but they were not trying to enjoy all this and thinking, we're so fortunate. They were just wanting to be with Krishna. तो जैसे कि महाराज ने कहा कि मैंने पहले भी बता चुका है कि द्वारका वासी जो थे वो द्वारका में जब रहते थे तो उनको भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी भी चीज का सरोकार नहीं था। हाँ, संपूर्ण जो शहर था वो बहुत ही ऐश्वर्यमान था, लेकिन उन ऐश्वर्य चीजों की तरफ उनकी मन कभी हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है उनकी खूबसूरती, और उस खूबसूरती से जो आकर्षित हो जाए उनको बाकी चीजों में कोई मन नहीं लगता। So, we get Krishna's 6 opulences, beauty and wealth and fame and knowledge. But his mercy, his personality, then has so many descriptions in Nectar Devotion on the different aspects of Krishna. These are the real opulences. तो भगवान षड ऐश्वर्यों के स्वामी है, लेकिन सबसे बड़ा उनका ऐश्वर्य है उनकी कृपा। वो दया सिंधु है, कृपा सिंधु है, तो उससे बड़ा और किसी भी चीज की तरफ आकर्षित होने का हमको जीवन में जरूरत नहीं है। So the 6 Goswamis is Tattva Turna Vishesha Mandalapati Srinim Sadatu. They were living, Raghunath Das was unlimitedly wealthy, especially Rupa and Sanatan. They were unlimitedly rich. And they just left it all to live in Vrindavan with nothing. आप हमारे षड गोस्वामी को देख लिए, money or fancy clothes or anything. आप हमारे षड गोस्वामियों को ही देख लीजिए कि रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही ऐश्वर्यवान थे, संपत्तिवान थे, श्रीमान थे, और उनके अलावा रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे ये भी बहुत वित्तवारी थे,
लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखना शुरू किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन धाम चले गए और निशुल्क, बिल्कुल कुछ भी नहीं था उनके पास, और उस अवस्था में भी वो कृष्ण भावनामृत में एकदम आनंद से रहते थे। So I think Krishna just, he makes these just like this display of opulence because materialistic people are attracted in that. Like Prabhupada wanted to make beautiful temples and residential rooms in Mayapur and Vrindavan so that people would come there. Otherwise, ordinary people won't come if they have to live in a hut or sleep on the ground or something. इसके लिए शिला प्रभुपाद ने भी जब श्री वृंदावन धाम, मायापुर धाम में बड़े बड़े मंदिर बनाए, रहने के लिए गेस्ट हाउस बनाए, तो यही सोच के बनाया कि लोग आए उधर अच्छे से भगवान को देखें और उनको कोई कठिनाई ना हो। नहीं तो झोपड़े में रहने के लिए बहुत कठिनाई होती है, लोग आएंगे नहीं। तो भगवान का एक ऐश्वर्य इसके लिए भी होता है कि जिससे लोग आकर्षित हो उनकी तरफ। Prabhupada accepted it when they made really nice rooms for him, like in Bombay, but he wasn't attached. He never asked for them. प्रभुपाद जी को जब भी मुंबई में भी इस्कॉन में जब अच्छे से घर बना के दिया था तो उन्होंने उसको स्वीकृत किया, लेकिन स्वीकार करना एक बात होता है और उससे मोहित होना एक बात होता है। वे कभी भी उससे अटैच नहीं हुए। He lived very austerely for a long time. Even the room he had at different temples was nice compared to the brahmacharis, but it was very simple. प्रभुपाद ने बहुत ही ऑस्टरियस लाइफ जिया, बहुत ही तपस्यामय जीवन जिए। जब ये सब नहीं था तभी भी वो जी रहे थे, और जब था तभी भी उनको उनसे कोई राग नहीं था, अटैचमेंट नहीं था। In New York, they have a duplicate of his room which he had in the old temple. तो न्यूयॉर्क शहर के अंदर उन्होंने एक उसी प्रकार की प्रतिमा बनाई है जिस प्रकार में वो पुराने मंदिरों में भारतवर्ष में रहते थे, शिला प्रभुपाद। The desk was a piece of plywood on top of, I don't know, some cement blocks or something, तो वहां पर एक छोटा सा सीमेंट ब्लॉक के ऊपर एक लकड़ी का ऐसा बिछौना जैसा था, तो उसी को उन्होंने वहां पर प्रतिमा बनाई है। Of course, it was nice overall, but nothing like the rich people and nothing like the big hotels or something. हाँ, ये सब अच्छी चीजें बनाई, खूबसूरत बनाई और था, लेकिन किसी बड़े बड़े होटल के समान नहीं था। So we're more, devotees are more interested in Krishna's beauty. That's the most wonderful of all his opulences. ये भगवान की सबसे खूबसूरत ऐश्वर्यों में से एक है। But then there's the beauty of the holy name, which is received by hearing, the beauty of Krishna's intelligence, which we understand it from reading the Bhagavad Gita, Krishna's personality, which we experience from Srimad Bhagavatam. So this is what devotees learn to do. Krishna will give opulence. तो भगवान का सबसे ऐश्वर्यमय चीज है उनकी खूबसूरती और उनके बारे में जो लिखा है भगवत गीता में, और सबसे मधुर है उनके नाम की ध्वनि या उनके नामों को जपना, और भगवान जरूर हम लोग को उसका आशीर्वाद देंगे। Okay? ठीक है अभिषेक प्रभु। Yes, Maharaj, thank you very much for enlightening us. Like Dubai, there's a lot of opulent hotels, right? When I booked my airplane ticket, it said, "Do you want to get a hotel in Dubai?" दुबई भी बहुत ऐश्वर्यवान जगह है। जब मैंने दुबई के लिए टिकट बुक किया तो मुझे कहा आपको कोई होटल में रहना है क्या? So it showed a sample of 3 different hotels. And 2 of them were $300 a day or something. तो 2 या 3 ऐसे होटल थे जो $250 से $300 प्रति दिन का था। And one was $2,000 a day. और एक था $2,000 एक दिन का। I don't know what you get from that, but some of them are much more. So you get servants, you get golden sink or something, you know. तो महाराज सोच रहे कि $2,000 में क्या देंगे, तो हो सकता है कि आपके आसपास बहुत सारे आपके नौकर चाकर होंगे जो आपके लिए हेल्प करेंगे।
Prabhupada, they offered him a hotel sometimes. He said, no, no, no. Even the temple had almost nothing. He'd stay in the temple. तो होटल का जरूरत नहीं, अगर आस पास में कोई टेम्पल है तो हम वहीं पर रह जाएंगे, मंदिर या उसका कोई आश्रम है तो। All right. Hare Krishna. हरे कृष्ण। I was just trying to say how, this sounds really unbelievable, but if you really know history and see how things, even like I said, the Egyptian remnants, whatever they found in South America when the Europeans first went there, there was so much gold, but they just stole it all. They just took it all out. There was so much gold, the temples and wonderful buildings and everything. The ravages of time are not there anymore. तो महाराज यही बता रहे हैं कि बहुत सारा लूट पाट के यहाँ से लेके गए हैं, भर भर के सोना चांदी और ऐश्वर्यवान चीजें जो है चोरी की गई है। हरे कृष्णा। अभिषेक प्रभु, दामोदर देश यात्रा। हरे कृष्णा। His Holiness Kavichandra Swami Maharaj ki jai. Jai, I think there are no more questions from anybody. Thank you very much, Radha Pankaj Prabhu, for your wonderful translation. Today it's supposed to be your class. You have taken it as a seva to Maharaj. It is more wonderful seva. Thank you very much. Prabhu, that is my the blessings of Maharaj what I'm getting. Yes, Prabhu. We are also blessed with Maharaj's wonderful class in the morning. It is a great blessing for us. This was a much better service, Prabhu. Yes, Prabhu. Hari Bol. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Maharaj. Thank you very much for your kind blessings. All right. Thank you for the translation, for your attendance. How many are there? Maharaj, 56, Maharaj. 56. But during the class there were 77. Okay. It's getting late. So thank you very much. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gauranga. Thank you, Maharaj. New York. Said Los Angeles, so New York. Yes. Thank you, Maharaj. Now I request Sriman Jaigovind Das Prabhu to announce the week program or coming programs, next week programs, etc. Hare Krishna, Prabhu. Maharaj, please accept my humble obeisances. Hare Krishna. Maharaj, wonderful class, and thank you, Radha Pankaj Prabhu, for the wonderful translation. Hamara Ramayana Yatra, they have completed successfully and they have returned safely. Thanks for all your prayers. And this Sunday, we are having a program at St. Mark's School. So Sunday Ekadashi bhi hai. सब भक्तों से निवेदन है सत्संग संडे का दिन सन मार्क स्कूल में आइए और सत्संग का लाभ उठाइए और we have a good speaker this week. We'll send the link, we'll send the posters in a couple of days. Thank you. Over to your Rasikanand Prabhu for the prayers request. Thank you very much, Prabhu. हरे कृष्णा। अभी आज का कार्यक्रम विराम को पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में सबसे पहले महाराज का अच्छा स्वास्थ्य के लिए और इस ग्रेस चित्तहरि प्रभु का स्वास्थ्य के लिए और हर ग्रेस श्रीवल्लभ प्रभु का जननी परिपूर्ण राधा देवीदासी माता जी के लिए और यूक्रेन में कल या परसों रशिया का मिसाइल अटैक की वजह से 2 भक्त शरीर त्याग किया, उन लोगों के लिए और एक भक्त तो उनको चोट लग गया, अभी हॉस्पिटल में है और
His Grace ललित दौलत रमानी प्रभु का साला और जीजा मतलब हिज ब्रदर इन ला देह त्याग हुआ कल उनका हार्ट अटैक में। तो उन लोगों को हम प्रार्थना करेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करके आज का प्रोग्राम विराम करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सभी भक्तों का आध्यात्मिक प्रगति को के भी मैं प्रार्थना किया। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद। अभी विराम करेंगे, मैं क्लोज करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु।